Fiscal deficit. Yes, and since inflation is within that tolerance limit of 4 to 6%, but it should not cross. So these are the challenges, and growth has to be accelerated. Though manufacturing sector economic survey says it is growing 11 point plus, and service sector is also increasing 8%. So in time to come, things are going to be better. Okay. But only thing is how to grow this level 8.8% considering the inflation. Crude prices is very high, so that that affects to our inflation. So I think these challenges are with the government, and expectations of the corporates with the finance minister is reduce taxes in the form of GST, rationalization like automobile parts. They want rationalization of 18%. So in the same way, many expectations are from corporate as well as सर्विस सेक्टर एंड वल्नरेबल सेक्टर. ठीक है. सो लेकिन अग्रवाल साहब, जो वर्तमान समय की स्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, उसमें करेला और ऊपर से नींद चढ़ा जैसी स्थिति है, क्योंकि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट भारत ही नहीं दुनिया के कई सारे देश झेल रहे हैं. ऐसे में इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि उसमें बजटीय आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक मार्केट में कैश फ्लो नहीं होगा, आप कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएंगे? तो ये चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट के पास चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत स्पेंड करना है जी, एफडीआई को अट्रैक्ट करना है, और क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं, उसके लिए रेगुलेशंस करने हैं. तो ये चैलेंजेज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एफडीआई हैज टू बी वेरी लिबरल. तो एफडीआई के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें इजी करने पड़ेंगे, सो दैट एफडीआई कैन बी अट्रैक्टेड. सो ये चैलेंजेस हैं, और इसको मीट करना है इस बजट के अंदर. बिल्कुल. हाँ जी. और 2 घंटे से भी कम का वक्त है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं. इस समय सीधा हम संसद भवन परिसर का रुख करेंगे. मेरे सहयोगी पवन शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं. पवन, थोड़ा सा हमें बताइए, पेपरलेस बजट है इस बार लगातार दूसरी बार, थोड़ा हमें बताइए कि इसके पहले किस तरह की सरगर्मियां और हलचल संसद भवन या हम कहें वित्त मंत्रालय से तो अब निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ अब राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख किया जा रहा है. क्या क्या इसकी पहले प्रक्रिया होती है बजट पेश करने से पहले? प्रीति, जैसा आपने बताया कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ अभी जा रही हैं. उसके बाद वहां से जो औपचारिक अनुमति है राष्ट्रपति की वो ली जाती है. उसके बाद वो संसद भवन में पहुंचेंगी, और यहाँ पे जो कैबिनेट है उसकी अप्रूवल ली जाती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कैबिनेट के सभी सदस्य रहेंगे, और वो औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वो मीटिंग 10:30 के करीब है यहाँ पे, और फिर 11 बजे जो है वो देश के सामने बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे. ये तो अभी का कार्यक्रम है, पर जहां तक बात है प्रीति, किस सेक्टर पे फोकस रहने वाला है, देश का जो भी वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी को आशाएं रहती है बजट से. आम आदमी को कौन सी चीज महंगी होगी, कौन सी चीज सस्ती होगी, और जो वर्तमान परिस्थिति है कोरोना काल में, क्योंकि ये निर्मला सीतारमण जी का दूसरा बजट है कोरोना काल का, तो इसमें पिछली बार जो जैसा रहा था कि हेल्थ पे ज्यादा जोर दिया गया था, और बाद में आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार ने जो है वो पैकेज का ऐलान भी किया था. इस बार जो है प्रीति, फोकस वही रहने वाला है कि किसानों पे फोकस रहने वाला है, कृषि पे फोकस रहने वाला है, और एमएसएमई जो सेक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रीति. इसमें जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं प्रीति, उसका जो है जीडीपी में जो योगदान है वो 30% के करीब है, और देश की जो 11 करोड़ जनता है, 11 करोड़ जो लोग हैं उस पे निर्भर करती है देश की जनता. और अभी जब ये कोरोना काल आया तो उस दौरान भी असर तो सभी सेक्टर पे पड़ा है, एमएसएमई सेक्टर पे भी प्रभाव पड़ा है. पर इसके दौरान भी अगर हम आज की डेट में बात करें तो 48% जो एक्सपोर्ट होता है प्रीति हमारे देश से, उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत योगदान रहता है. यही वजह है कि जब कोरोना काल आया तो आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत करी प्रधानमंत्री ने, और इसके लिए जो है 20 लाख करोड़ रुपए का जो है
वो पैकेज दिया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया। और एमएसएमई सेक्टर ने बहुत योगदान दिया है, क्योंकि जो कारीगर है, जो मजदूर वर्ग है, वो इससे जुड़ा रहता है। तो इस बजट में भी उम्मीद है कि ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। दूसरा बड़ा सेक्टर कृषि का सेक्टर है प्रीति। कृषि सेक्टर में क्योंकि अभी हमने किसान आंदोलन की बात है कि वो बिल तो वापिस हो गए हैं, पर इसके बावजूद कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, इस देश को किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी सरकार, ये बड़े मुद्दे हैं। और इसमें जो होना है कि जो ई नाम है और जो सरकार ने शुरू किया है, जो किसानों का एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है एफपीओ, उनके लिए सहूलियत की बात है। उसमें फूड प्रोसेसिंग की बात भी है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लोग, महिलाएं जुड़ी होती हैं देश की प्रति, तो ये बहुत बड़े योगदान। तो इन सभी सेक्टर्स में बजट का आवंटन ज्यादा होगा। मनरेगा में भी मजदूर जुड़े होते हैं, देश का आम आदमी जुड़ा था, उसमें भी बजट बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर अपडेट लेंगे हम। और हमारे साथ ऑनलाइन दो खास गेस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, के यतीश राजावत और AK भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और पहला सवाल मैं यहाँ पर राजावत साहब आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जिक्र कर रहे थे पवन, कि कृषि के क्षेत्र में बहुत उम्मीदें हैं, और उसमें वो जरूरी इसलिए क्योंकि सरकार ने वर्ष 2022 ही वर्ष निश्चित किया था कि किसानों की आय को दुगुना किया जाएगा। लेकिन कोरोना की चुनौती के बीच अब कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके से मजबूती दी जाएगी देश के अन्नदाता को? देखिए, ऐसा है कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य तो रखा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये लक्ष्य अपने आप में तो नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार ने कई और कदम उठाए थे, जैसे कि आपको पता है कि मनरेगा का जो आवंटन था वो कई गुना बढ़ा दिया गया था। और अभी भी आप अगर देखें, जो मनरेगा का जो डिमांड है वो करीब 110%, 120% पे चल रही है कुछ राज्यों में। यानी कि सरकार ने जो आवंटन किया था मनरेगा में, उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए और आवंटन की जरूरत है, क्योंकि जो रूरल एरियाज में भी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, या वो अर्बन एरियाज से माइग्रेट होकर रूरल एरियाज में पहुंच गए हैं, और उनको अब जरूरत है काम की। तो एक चीज जो होने वाली जरूरी है इस बजट में, वो जो ओवरऑल आवंटन है मनरेगा का, जो पिछले साल करीब 1,78,558 करोड़ था, वो शायद और बढ़ जाए, या जो करंट से उसकी मतलब अमाउंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बढ़ जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने कई और स्कीम, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, खासकर रूरल आवास योजना चालू की थी, उसमें आवंटन बढ़े। नेशनल हेल्थ मिशन आप जानते हैं, क्योंकि महामारी थी तो हेल्थ पे जरूरी था सरकार को खर्च करना जी। तो जो आवंटन किया था करीब बढ़ा के, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन पे ही आवंटन जो बढ़ाया था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इससे पहले कभी नेशनल हेल्थ मिशन में इतनी भारी बढ़त नहीं हुई। ठीक है। ओवरऑल जो उसमें एलोकेशन था वो करीब 90,900 करोड़ के करीब हो गया नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को मिला के। तो हम जो अब इस बजट में देख रहे हैं, हम प्राथमिकता जो देख रहे हैं सरकार की, वो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को टैक्स स्टॉप या टैक्स इंसेंटिव देने की नहीं है। इंडस्ट्री को जो ग्रोथ की तरफ पुश करने की एक जो पहल है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के थ्रू है। और जितने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स में अभी तक आवंटन हुए हैं उसमें शायद मामूली फेरबदल हो सकता है, या एक आध कोई सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव है वो उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री को खास रियायत टैक्स के माध्यम से नहीं दी जाएगी। हाँ, ठीक है। इस पर अग्रवाल जी का रिएक्शन आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा राजावत जी, आपको मैं फिलहाल यहाँ रोक रही हूँ। ठीक है, ये टैक्स जो आप टैक्स में राहत को लेकर बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उम्मीद इसकी कम है, जबकि अग्रवाल जी ने कहा है कि इसको लेकर जरूर वो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कोई राहत मिले। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले AK भट्टाचार्य सर, क्योंकि जब हम कृषि की बात कर रहे हैं और ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात, उस बीच जो हिचकोले हमारी अर्थव्यवस्था ने खाए हैं और चुनौती का सामना किया है, वो जरूर थोड़ा सा हर्डल बने रहे, लेकिन किसानों की जेब में पैसा जो है वो सीधा पहुंचे।
चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात करें, वो सब्सिडी देने की बात करें, या फिर तमाम और जरिए जिसकी बात लगातार की गई है। पिछली बार 2021-22 में 1.23 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट हमारे सामने था। इस बार ये कितना बढ़ सकता है, और क्या ऐसे उपाय जिससे किसानों की जेब में सीधा पैसा पहुंचे, क्या इस तरह के उपायों की और ज्यादा उम्मीदें हम कर सकते हैं? देखिए, दो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कृषि के क्षेत्र में जो सरकार, केंद्रीय सरकार जो कर सकती है, वो दो तरह कर सकती है। क्योंकि ज्यादातर जो उपाय जो हैं वो प्रदेश सरकार के पास है, पर जो केंद्र सरकार के पास के बजट के तहत जो वो सुविधा प्रदान कर सकती है, वो दो तरह की है। एक तो है कि जिसकी आपने जिक्र की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उसमें इस वक्त जो दिया गया है अमाउंट, वो है 6,000 रुपए पर लैंड होल्डिंग फैमिली। और उसमें हमने ये देखा है कि करीबन 140 मिलियन यानी 14 करोड़ जो लैंड होल्डिंग फैमिलीज हैं, जो फार्मिंग फैमिलीज जो हैं हमारे देश में, उसमें अभी तक सिर्फ 10 करोड़ ऐसे जो फैमिलीज हैं उनको ही ये पैसा अभी तक बांटा गया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉटलनेक्स हैं और बहुत लोगों के पास लैंड होल्डिंग का परमिट भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि दो तरह से ये प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसकी कामयाबी में हमें कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैश ट्रांसफर है, पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंचता है, लीकेज की स्कोप बहुत कम है। तो एक तो है कि 6,000 रुपए से बढ़ाकर क्या इसको 8,000 रुपए या 10,000 रुपए कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो उसमें एक साफ कह दिया गया है कि जो फिस्कल रूम जो है वो आपके पास है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो एक तरह तो ये है कि किसान सम्मान योजना की जो अमाउंट जो है उसको बढ़ा सकते हैं जी। और दूसरी बात जो ये है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कृषि के लोगों के लिए 23 क्रॉप्स में, उसमें अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि स्टैट्यूटरी तरह से नहीं, पर एक कमिटमेंट की तरफ से, और इरिगेशन और बेसिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं तो कृषि की जो आय करने की जो क्षमता जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो मैं समझता हूं ये तीन तरह से, एक तो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका एक एश्योरेंस एक अच्छा हो, और तीसरा है कि जो पीएम किसान सम्मान योजना में जो अमाउंट जो है उसको बढ़ा दिया जाए, और उसके साथ साथ उसको डिसबर्स करने की जो प्रोसीड्यूर्स जो है उसको और भी सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि उसमें लीकेज तो नहीं, कवरेज बढ़ जाए उसको। तीन चीजें कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार कर सकती है। आपने जिस तरह से भट्टाचार्य सर फिस्कल रूम की भी बात कही है, सुजीत सर एक छोटा सा कमेंट कृषि क्षेत्र को लेके जानना चाहूंगी। जैसे भट्टाचार्य सर ने कहा कि फिस्कल रूम भी है, कृषि का बजट पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह का रहा, और ये वो दौर जब सब नेगेटिव में जा रहा था तब कृषि हमें सपोर्ट कर रही थी जी। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है, और ये कितनी उम्मीद बढ़ा रहा है कि कृषि क्षेत्र को और बड़ा सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आपने सही कहा, और इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि ये सेक्टर जो है हमें काफी मदद किया है इस महामारी में। 3.9% की ग्रोथ है। और अगर हम देखें, जैसे भट्टाचार्य साहब ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी जरूरत है। एग्रीटेक कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए कि, और ये जो ट्रांसफर ऑफ मनी है, जो कैश ट्रांसफर हम कर रहे हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करें ताकि ये स्मूथली और इसका एक्सपेंशन ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल से कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिस पर इसमें बजट थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, और ये एलाइड सेक्टर्स के जो स्पेशली जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर भी ध्यान काफी रखा जाएगा। ठीक है अग्रवाल साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया कि किसानों को मजबूती देने की हर संभव प्रयास किए गए। उसमें फूड ग्रेन एक्सपोर्ट बढ़ा है, पेरिशेबल आइटम्स के लिए किसान ट्रेन चलाई गई है, और कृषि प्रधान भारत में जब 70% आबादी गांवों में रहती हो, ऐसे में जो कोशिशें अब तक हुई हैं वो कोशिशें कितनी कारगर आप देख पा रहे हैं, और उसमें बजट से कितनी और उम्मीदें?
देखिए कारगर तो ऐसा है 3.9% हमारा जीडीपी ग्रोथ एग्रीकल्चर में रहा है जी। और एग्रीटेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का इस बजट में भी प्रावधान है, पिछले बजट में भी किया था। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्टोरेज और गवर्नमेंट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ज्यादा गन्ने की प्राइस को ठीक किया गया और उम्मीद है। तो ये सब जैसे भी 5 स्टेट इलेक्शंस में भी है, तो कुछ ना कुछ पॉपुलेस्ट मेजर भी गवर्नमेंट इसके ध्यान में रखते हुए भी करेगी और प्रोग्रेसिव बजट भी लाना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट दोनों तरफ से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। और मेरे समझ में यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 70% लोग गांव में रहते हैं, इसको बूस्ट करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, वाटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस पर मेरे ख्याल गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट करेगी। ठीक है, ए.के. भट्टाचार्य साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, ग्रामीण भारत को मजबूती देने की हर संभव कोशिश हो, जो संसाधन आवश्यक हैं वो वहां तक पहुंच सके, गांवों से पलायन रुक सके, ऐसी तमाम कोशिशों के बीच ग्रामीण भारत के बजट से प्राथमिकता के आधार पर क्या कुछ उम्मीदें आप देख रहे हैं? देखिए, जो ग्रामीण भारत की बचाव के लिए जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो संसाधन की जरूरत है वो सबसे ज्यादा जरूरत मैं 2 क्षेत्र में देखता हूं। 2 नहीं 3 कहूंगा मैं। एक तो पहली बात जो मैंने पहले भी जो मैंने जिक्र किया कि वो है कि कृषि क्षेत्र में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट चाहिए, उसमें बहुत कुछ काम करने की उम्मीद कर सकते हैं हम। इरिगेशन कहिए या आप जो क्रॉप और सीड्स अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। और 2 चीज जो हैं जिसके ऊपर हम ज्यादा नजर नहीं देते हैं, मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, वो है पहला हुआ जो तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का प्रसार और दूसरा हुआ कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था में एक एफिशिएंसी लाना। वो मैं समझता हूं दोनों चीज हमारी कृषि और रूरल जो ग्रामीण व्यवस्था में उन्नति कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो कमी नजर आ रही है और कोरोना के बाद जो शिक्षा में जो बहुत बड़ा एक चोट पहुंचा हुआ है, उसको संभालने के लिए जो हमारी जो ग्रामीण आबादी जो है वो आप समझ लिए स्मार्टफोन तो आ गए हैं, पर अभी भी जो ग्राम का जो बच्चा जो है वो शिक्षा से और दूर चला गया है। और ये 2 साल की जो एक गैप अर्बन इंडिया में भी वो गैप की महसूस हो रही है, रूरल इंडिया में तो और भी ज्यादा होगी। तो मैं ये समझता हूं कि रूरल इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ कृषि क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती एक बहुत बड़ी एक आशा मैं समझता हूं, आशा हम कर सकते हैं। और ये बजट इस तरह एलोकेशन की तरफ नजर दे सकता है। ठीक है, तो राजावत सर, कहीं ना कहीं हम माने कि अब तक ग्रामीण विकास में जब हम बात करते थे तो हर घर बिजली, हर नल जल, हर एक के पास पक्का मकान, शौचालय, इनकी बातें होती थी। लेकिन कोरोना ने हमें कुछ और जो हम कहें कि जरूरतें हैं एक तरह से, उनके बारे में हमें समझाया। जैसे भट्टाचार्य सर ने 2 बातों का जिक्र किया, तकनीकी शिक्षा, इंटरनेट की पहुंच और स्वास्थ्य। देखिए, 2 तरीके से देख सकते हैं कृषि को या रूरल एरिया को। रूरल एरिया में जो आवंटन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू होता है। इसमें उनके पास 2 बड़ी स्कीम है। पहली तो आप जानते हैं मनरेगा है, जिसमें सबसे ज्यादा आवंटन हुआ है 2020-21 में और उससे पहले 2019-20 में, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा जो क्षति पड़ी वो माइग्रेंट लेबर को पड़ी और उनके लिए नौकरियां या उनके लिए रोजगार इकट्ठा करने के लिए सरकार के पास सिर्फ मनरेगा एक स्कीम थी जिसके द्वारा वो कर सकते थे। दूसरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास बड़ी स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रूरल, जिसमें करीब 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया था पिछली बार। ये स्कीम भी एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करती है, जॉब्स क्रिएट करती है रूरल एरिया में। लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये स्कीम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि लॉकडाउन हुए, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। तो उम्मीद ये है कि शायद इस साल इसमें आवंटन बढ़ेगा और इसमें एलोकेशन के अलावा इसमें इसका यूजेज भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का बेहतर होगा, क्योंकि ये सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत आता है
और ये बहुत जरूरी है। देखिए ओवरऑल जो आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ सरकार कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है। पिछले 7 साल का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो जो स्कीम्स हैं वो उस आवंटन उन पे होना चाहिए जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होता है जी। एमएसपी वगैरह बढ़ाने की वजह से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट इकोनॉमी पे नहीं आता है। इसलिए वैसे भी सरकार कभी एमएसपी का बढ़ाना या घटाना बजट में अनाउंस नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में वो चेंज होगा। कोशिश यही रहेगी सरकार की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में कैसे बढ़ाया जाए, और उसमें जो फेरबदल पिछले 6 महीने 8 महीने में मनरेगा में हुआ, आपको पता है कि पूरा प्रोसेस रिफॉर्म हुआ है मनरेगा की स्कीम में। उसका जो सॉफ्टवेयर है और उसकी जो डिमांड कैप्चर करने का तरीका है वो सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है। इससे बहुत फायदा हुआ है रूरल एरियाज में, क्योंकि हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट अब अपनी डिमांड दे सकता है और उसकी जो पूर्ति है वो जल्द हो रही है, क्योंकि उसमें सरकार ने एक डेडलाइन लगा दी है कि अगर वो 14 दिन में उस डिमांड की पूर्ति नहीं करता स्टेट, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अभिभावक को या किसान को जिसने डिमांड खड़ी की है। तो इस तरह के प्रोसेस रिफॉर्म्स हुए हैं, और ये मेरे को लगता है कि इस तरह के प्रोसेस रिफॉर्म आवास योजना में भी होंगे। तो डायरेक्टेड पॉइंटेड स्कीम्स जो इसकी क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़िया है उन पे फोकस रहेगा, और ओवरऑल फोकस मेरे ख्याल से, क्योंकि फिस्कल स्पेस इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि रेवेन्यू में बॉयंसी है, बट आप ये भी देखिए कि आगे का जो साल है उसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी की टाइटनिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट टेपर ऑफ होने वाले हैं अगले 2 साल में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। फिस्कल डेफिसिट को अगर वो ज्यादा फैलाएगी तो फिर वो रेटिंग का इश्यू आ जाता है, जो ठीक है सर मेरे ख्याल से इस सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जबकि अगर इस पे इसलिए जो फिस्कल स्पेस की जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, तो ज्यादा फेरबदल मेरे ख्याल से टैक्स रेट। और अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है, ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी संसद भवन में, लोकसभा में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह के पास। नवविक्रम, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल पराक्रम, अब से कुछ ही अब देर बची है जब वित्त मंत्री यहाँ पर अपना जो देश का आम बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट उसे अप्रूवल देगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज का दिन खास तौर पर जो देश में, क्योंकि कोविड के बाद एक बहुत अहम रोड मैप आज के लिए होने वाला है, जो हम आज बजट देखेंगे। क्योंकि अगर पराक्रम हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखें, उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। ऐसे में अगले 25 सालों के लिए जो रोड मैप होगा आज हम देखेंगे, उसकी संभव है एक आधारशिला रखी जाए। तो एक बहुत अहम बजट है, क्योंकि कोविड महामारी आप जानते हैं कि हम पिछले 2 साल से बहुत लंबे अरसे से इस 2 साल तक इससे गुजरते रहे। ऐसे में अब आगे क्या रोड मैप होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी विक्रम, बदलते समय के साथ हम देख रहे हैं कि अब वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए देश का बजट पेश करेंगी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संसद भवन परिसर में भी उस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए संसद की जो कार्यवाही है वो भी 2 पारियों में रखी गई है इसी वजह से। देखिए पराक्रम, अगर हम पेपरलेस बजट की बात करें तो हमने पिछली साल भी देखा था कि टैबलेट के जरिए ही वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। और इसके अलावा हम संसद के कामकाज को देखें तो संसद का काफी हद तक कामकाज अब ई ऑफिस के जरिए होता है। तो एक तरह से
जो संसद के कर्मचारी हैं या फिर जो पत्रकार हैं वो इस सिस्टम से जो नया तरीका है उससे फेमिलराइज हो चुके हैं। तो जो नई तकनीक है, और खास तौर पर हम आपको बताएं पराक्रम, अब क्योंकि आपने तकनीक की बात की है तो इस बजट में भी लोगों को उम्मीदें हैं, खास तौर पर जिस तरीके का स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में बढ़ा है। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा कि स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो कितने भारत एक ऐसा देश है जहां जो यूनिकॉर्न है, जिनका यूनिकॉर्न यानी कि माना जाता है जो कि करीब $1 बिलियन से ज्यादा का जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, वो भारत में की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में हम देश में जो तकनीक के क्षेत्र में है, आज के बजट में वो भी दिखाई देगा कि हम तकनीक के क्षेत्र में कितना बजट में खर्च करते हैं। जी पराक्रम। बिल्कुल नविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम जो तमाम अपडेट है उसके लिए आपके पास आते रहेंगे। अग्रवाल सर, अब एमएसएमई को लेकर थोड़ी अगर बात कर लें तो ये कहा जा रहा था कि एमएसएमई में जो सूक्ष्म और लघु उद्योग का बजट है वो अलग रखा जाए और मध्यम उद्योग का बजट वो अलग रखा जाए। ये आप कितना बड़ा फैसला इसे लेकर आप मानते हैं हो सकता है, और इससे किस तरह की सहूलियत हो सकती है आगे? देखिए, जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं और जो मीडियम यूनिट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो यदि हम उनको फोकस करें तो वो रूरल का भी वो सर्विस करता है। तो गवर्नमेंट है ना, जो माइक्रो यूनिट्स के ऊपर उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव दे, उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन करे, तो गवर्नमेंट के पास उस पे बजट पे भी कुछ ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। वो छोटी छोटी यूनिट्स और वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो रूरल डेवलपमेंट के एंगल से वो बहुत बढ़िया है। और जो हम कह रहे हैं ना, किसानों की आय डबल की जाए, तो जो पार्ट अपना एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें उनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को एक फंड अलग से बनाना चाहिए, जो कि 1% ऑफ जीडीपी यदि बना दिया जाए तो उनको लोन की भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा सकती है। कोई छोटा बैंक, माइक्रो बैंक जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उनकी लोकल नेसेसिटी को गहराई से समझेंगे और वो भी उसके लिए उपयुक्त होगा, तो उस पर भी फोकस किया। इसके साथ सुरजीत जी, एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और हमने देखा कि कोरोना संकट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस क्षेत्र के लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार की योजना के तहत 13.5 लाख एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचा है। अब इन्हें और ज्यादा मजबूती कैसे दी जा सकती है इस बजट के जरिए? देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती है इस सेक्टर का वो है एक्सेस टू कैपिटल। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स बनाए गए थे उसके चलते इस सेक्टर को बहुत राहत मिली थी कोरोना काल में, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो उस सेक्टर को बेसिकली हैंड होल्डिंग की जरूरत है। उसको किस तरह से उस क्षेत्र से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसका एक्सेस टू कैपिटल बढ़ाएं, उसको किस तरह से आप उस सेक्टर को आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें। तो ये सारे चुनौतियां हैं। ठीक है। और किस तरह से यहां से एक्सपोर्ट्स और बढ़ाए जाए इस सेक्टर से, तो ये सब मुद्दे हैं। ये सब लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं और इसको सरकार एड्रेस कर रही है और आगे भी करेगी। ठीक। भट्टाचार्य सर, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो सर्विस सेक्टर से ज्यादा एक तरह से अनुमान लगाया गया, एक्सपेक्ट की गई और डबल फिगर में एक्सपेक्ट की जा रही है। बड़े फैक्टर्स आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं और कितना बड़ा रोल जीडीपी बढ़ाने में ये सेक्टर करेगा, आपको लग रहा है? देखिए, जो इकोनॉमिक रिकवरी जो 21-22 में जो आई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि कोरोना काल में जो कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन के बाद ये रिकवरी इस चीज का सूचक है कि हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था जो है, जो जरा कोरोना के प्रकोप में आई थी, वो वापस उसका पहिया वापस चल रहा है। पर मैं ये समझता हूं कि जो अभी तक का जो हमने जो ग्रोथ जो देखा है, वो मेनली हमने गुड्स सेक्टर में ज्यादा देखा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा देखा है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर अभी भी ऊपर नीचे कर रहा है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज जो हैं, जो टच इंडस्ट्रीज जो हैं, जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज जो हैं, टूरिज्म कहिए या इवन जो
जो उबर सर्विसेज सेक्टर जो है, इसमें थोड़ा बहुत अभी भी उतनी उछाल नहीं आई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो एस्टिमेट जो किया गया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एस्टिमेट सर्वे में किया गया है, वो शायद एक अंडरएस्टिमेशन हो सकता है, क्योंकि अगर तेल का दाम सचमुच अगर नीचे तो नहीं आएगा, पर अगर मान लीजिए $80 या $75 के करीबन आ जाए, जैसे सर्वे में भी कहा गया है, अगर जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी विड्रॉल की जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसका अगर एडवर्स इम्पैक्ट ज्यादा न हो, तो मैं मानता हूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसमें हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक देखा है वो एक पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, पर वो रिकवरी और कितना दूर जाएगा, इस वक्त जो लग रहा है कि 8.5% तो IMF की जो एस्टिमेट है उससे भी कम। तो मैं ये समझता हूं उसमें एक अपसाइड है, और ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच मैं कहूंगा। ठीक है, लेकिन काफी चीज डिपेंड करता है किस तरह से जो रिफॉर्म स्ट्रैटेजीज जो है, किस तरह से बजट इसको देखता है, किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, इसके ऊपर काफी चीज निर्भर करता है। ठीक है राजव साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया कि $48 बिलियन का विदेशी निवेश देश में आया है। इसका फायदा कैसे MSME सेक्टर को ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 60% लोग भारत के ऐसे हैं जो कि लोअर इनकम ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। कैसे मजबूती मिल सकती है इन्हें, और MSME सेक्टर को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है? देखिए जी, आप जानते हैं कि सरकार ने पैंडेमिक के दौरान कुछ चीजें MSME के लिए डायरेक्टली की थी, जैसे कि एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लागू की गई थी MSME के लिए, जिसमें 4.5 लाख करोड़ का आवंटन था कि इतना क्रेडिट हम MSME को देंगे, जिसमें से करीब 2,28,000 करोड़ डिसबर्स भी हुआ, जिसका फायदा MSME को हुआ 2021 में। ये स्कीम आप जानते हैं कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर चाहें तो इस स्कीम को 2022-23 के लिए भी बढ़ा के लागू कर सकती हैं, क्योंकि इस स्कीम से एक डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है MSME को, जो लिक्विडिटी से हर्ट हुए थे, क्योंकि उनके या तो उनका धंधा बंद हो गया था, या उनके पास ऑर्डर आने बंद हो गए थे, या ऑर्डर आ भी रहे थे तो उनको बड़ी इंडस्ट्री पैसा टाइम पे नहीं देनी थी। जी। दूसरी जो बड़ी स्कीम थी वो आपको पता है, वो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, जिसमें 2020-21 में करीब 36,900 करोड़ का आवंटन हुआ था, और 21-22 में उसका आवंटन 22,900 करोड़ के करीब हुआ था। इस स्कीम के तहत भी सरकार चाहिए, ये RBI के थ्रू है दोनों स्कीम, इस स्कीम के तहत भी अगर सरकार चाहे तो इनको कंटिन्यू कर सकती है इस साल के लिए, जैसे कि एक तरह से लिक्विडिटी का फायदा हो। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को एक तरह से 1 साल के लिए स्थगित किया गया था MSME के लिए, क्योंकि उसमें बहुत MSME बंद हो रहे थे। जी। ये मतलब पिछले साल ये स्कीम खत्म कर दी गई, लेकिन अगर ये स्कीम दोबारा लागू होती है, खासतौर से उन माइक्रो या स्मॉल कंपनीज के लिए जिनकी स्थिति अभी भी खराब है, तो उनको फायदा होगा, क्योंकि ये बिजनेस या ये धंधा ऐसा नहीं है जिसको कोई खरीद सकता है या कोई उसमें बैंक को कुछ निकल सकता है। ये जो चला रहा है एंटरप्रेन्योर, उसी के हाथ में होता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो टर्म लिक्विडिटी की एक फैसिलिटी दी थी 50,000 करोड़ की RBI ने, जिसको खोला गया था, अभी भी खुली है ये 31 मार्च 2022 तक। होपफुली ये लिक्विडिटी फैसिलिटी ओपन रहेगी, क्योंकि इसका भी फायदा छोटे MSME को बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है इस एरिया में जो बहुत जरूरी है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम तभी होगा तब डिजिटल बैंक या नए बैंक इस क्षेत्र में आ पाएंगे, और जैसे वो उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर कम होगा तो वो सस्ते दर पे सस्ते ब्याज दे पाएंगे, क्योंकि इशू
सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं है एमएसएमई के लिए, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है एमएसएमई के लिए, क्योंकि उनके मार्जिन बहुत कम होते हैं। ठीक बात। तो एक बड़ा रिफॉर्म जो एफएम कर सकती हैं इस बजट में वो कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दें, उसके लाइसेंसेस इशू करें, नए डिजिटल बैंक्स आए और वो एमएसएमई के लिए एक चीपर सस्ता क्रेडिट मुहैया कराएं। ठीक है रमेश जी। तो एमएसएमई को लेकर अग्रवाल सर और क्या बड़े कदम किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो बजट आवंटन था उसने एमएसएमई को लेकर बहुत उम्मीदें बढ़ा दी हैं इस बार भी, और खासकर हम देख रहे हैं कि इस साल में जो खासकर एक्सपोर्ट को लेकर जो चुनौतियां आई हैं, विदेशी बाजार जो बड़ी चुनौती बने हुए हैं, तो और क्या उपाय हैं जिनकी उम्मीद की जाती है? देखिए, कॉर्पोरेट पे 25% टैक्स है, 25-30% मिला के, और पार्टनरशिप पे और एलएलपी पे अभी भी वो टैक्सेस 40% तक जाते हैं। तो वो रैशनलाइजेशन होना चाहिए, जो कि एमएसएमई नॉर्मली पार्टनरशिप या एलएलपी की फॉर्म में ज्यादा होती है, तो वो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेज होना चाहिए। यहाँ पर मैं रोकूंगा अग्रवाल साहब आपको। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास वहां पर पहुंची थी, और जैसा कि बताया कि एक औपचारिक अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति से, और अब से कुछ देर बाद फिर कैबिनेट में रखा जाएगा बजट, और उसके बाद ठीक 11 बजे संसद भवन में लोकसभा में वित्त मंत्री देश का आम बजट पेश करेंगी। जी अग्रवाल साहब, आप कह रहे हैं अपनी बात। दूसरा ये है, जैसे उनकी जो सेविंग्स होती है उस पर डिडक्शन ज्यादा मिले ताकि उनके हैंड्स में पैसा रहे। जी। लाइक एटीसी वो 1.5 लाख रुपए है, इसको 2.5 लाख रुपए कर दी जाए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ाई जाए, और बाकी ये जैसे इन्होंने कहा इमरजेंसी क्रेडिट ECG स्कीम जो 4.5 लाख करोड़ है वो 2022 में खत्म हो रही है, इसको एक्सटेंड किया जाए 23-24, और उनका जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो लंबा किया जाए, सो दैट दे कैन पे इन 5 years 6 years टाइम। तो ये एमएसएमई को सपोर्ट होगा, और जीएसटी का एक थ्रेशोल्ड लिमिट उन पर बढ़ा दी जाए ताकि वो वहां तक उनको जीएसटी की परेशानी ना हो, और अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि एमएसएमई नॉर्मली उनको हाउस चाहिए तो उनके उसमें भी इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है उस पर भी इंटरेस्ट डिडक्शन बढ़ाई दी जानी चाहिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिमिट है 45 लाख से 1 करोड़ कर दी जाए, सो दैट जो छोटे लोग हैं जिनके पास व्यवसाय है वो इन चीजों से उनका पास पैसा रहे, कंजम्पशन इंक्रीज हो। ठीक है। और सर्विस सेक्टर को लेकर सुरजीत सर, स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर को इस समय कितनी मदद की जरूरत मैं कहूंगी है? देखिए, ये एक सेक्टर है जो ऑलमोस्ट ओवर 50% है हमारे इकोनॉमी का, और हमने देखा कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंचा तो इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर। तो जितने भी होटल्स हो, टूरिज्म हो या सिविल एविएशन हो, एयर ट्रैवल हो, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उसमें बहुत मुश्किल में रहे, और अभी भी बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव जो हुआ है उसमें भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हुए हैं, लोगों को नौकरियां से हाथ धोना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से इस पर तो जरूर कुछ फोकस होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ हम स्टेप्स देख सकते हैं कि किस तरह से इन सेक्टर्स को रिलीफ पहुंचाया जाए। ठीक है। यहाँ जो प्रॉब्लम जो सरकार के लिए है, मतलब आ रही थी, यहाँ आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है। मगर एक मांग हुई थी कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर करें उन एम्प्लॉइज को जो जिनकी नौकरियां गई हैं, लेकिन उसमें काफी आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, उसमें लीकेजेस की प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इस पर भी काम चल रहा है कि कैसे अगर फ्यूचर में इस तरह से आपदा आई तो उसमें कैसे हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब स्टेप्स पर भी मतलब फोकस रहेगा, और इस सेक्टर पर ध्यान जरूर रहेगा, क्योंकि ये सेक्टर अभी बहुत अच्छा रिकवरी शुरू किया था जब थर्ड वेव आई थी। ठीक है। अब इसको सस्टेन करने के लिए, बिकॉज सिविल ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटल, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से इसमें भी काफी इंसेंटिव्स के साथ कुछ सरकार देखेगी इसको। ठीक है। और ये फिलहाल हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं संसद भवन परिसर से, ये तस्वीरें हैं, और लगातार हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो बजट के पहले की प्रक्रिया और तैयारियां एक तरह से होती हैं। ये बजट की कॉपी है जो इस समय लेकर जाई जा रही हैं। संसद भवन परिसर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
पहले हमने देखा वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति भवन रवाना हुई। राष्ट्रपति से जो औपचारिक मंजूरी ली जाती है वो लेने के बाद अब संसद भवन परिसर की तरफ रुख होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन की हैं। राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी ली गई है बजट को लेकर और इसके बाद अब कैबिनेट की मंजूरी लगभग 10:10 के आसपास जो अनुमान है उस समय कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और इसके बाद 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बजट की कॉपी जो संसद भवन परिसर में पहुंची हुई है। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद राज्यसभा में टेबल की जाएगी, जो बजट है वो टेबल किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और आपको बता दें कि इस बार वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए डिजिटल बजट पेश करेंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की राष्ट्रपति भवन में औपचारिक अनुमति लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उनके साथ में दोनों वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी और संसद टीवी पर लगातार आप देख सकते हैं देश का आम बजट ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। और हमारे साथ देखिए भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे। अब जब हम बजट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाती है, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग है उससे अमूमन निराशा हाथ लगती है या फिर ये कहें कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाता देश के बजट से। तो मध्यम वर्ग के लिए कितनी उम्मीदें हो सकती हैं अलग अलग सेक्टर्स में? पराक्रम के सवाल में थोड़ा सा मैं एक पहलू जोड़ूंगी सर। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा आम भाषा में समझाइए, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है वो सीधा सीधा ये सोचता है कि क्या हमें टैक्स में कोई रिबेट मिली, लेकिन मान लीजिए वो डायरेक्ट रिबेट नहीं है तो भी इनडायरेक्ट तरीकों से कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा इन पहलुओं को समझाइए हमें आम भाषा में। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो पिछले करीबन 4 साल से बजट की मध्यम वर्ग को कोई बेनिफिट पहुंचाने की जो क्षमता जो है जी, उसमें काफी कमी हो गई है, क्योंकि जब से जीएसटी काउंसिल बन गया है तब इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो हेर फेर रगल बगल जो होती है, कम करना या ज्यादा करना, वो अब जीएसटी काउंसिल में होती है और बजट के अंदर नहीं होती है। तो मान लीजिए जीएसटी काउंसिल के पास एक ऐसा प्रपोजल सुनने में आया है, रिपोर्ट्स आई हैं कि एक ड्यूटी रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, जीएसटी रेट की बात हो रही है जी। तो मैं ये समझता हूं कि जब बजट से मध्यम वर्ग को जो बहुत बड़ी एक करने की पहले की जो आशा 4 साल पहले जो आशा जो हुआ करती थी, वो अब आशा कम हो गई है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज, जो जीएसटी रेट है वो बजट के अंदर नहीं रहा है, बजट के बाहर आ गया जी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो ये है कि जो मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आयकर देता है, और वो आयकर में जो रिफॉर्म्स जो बात की गई थी उसमें थोड़ी बहुत रिफॉर्म आ चुकी है। मान लीजिए जो पिछले साल में एक आयकर में एक ऑप्शन दिया गया था, मैं ये समझता हूं कि जो ऑप्शन जो दिया गया था वो ऑप्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो इस बार शायद वो और भी अच्छा करने की उम्मीद हम कर सकते हैं। शायद देखिए जो एक लोअर रेट की जो के साथ एग्जम्पशन हो देने का जो ऑप्शन जो है वो तो मैं समझता हूं कि इस बार हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो इनकम टैक्स रेट जो हैं वो कम हो जाएंगे पर आपको एग्जम्पशन को भी खो जाना पड़ेगा। तो मध्यम वर्ग के लिए मैं समझता हूं ये एक क्लैरिटी या सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण जिसे हम कह सकते हैं, इसकी आशा हम जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि जो कोविड के दौरान जो एक स्ट्रेस जो हुआ था, जो फाइनेंशियल एक जो स्ट्रेस जो हुआ था, उसमें जो सरकारी जो कर्मचारी जो हैं उनके लिए ये जो एलटीसी का जो ऐलान किया गया था 2 साल पहले, वैसे स्कीम्स से भी काफी फायदा मध्यम वर्ग को, सरकारी कर्मचारियों को आ सकता है। पर मुझे लग रहा है कि जो आयकर में जो वृद्धि हम देख रहे हैं कलेक्शंस में, वो जो पिछले 2 सालों में जो
आयकर को कम करने से वो बायंसी आई है जी। और ये ऐसे जो कदम जिसकी मैंने जिक्र की वो करने से मैं समझता हूं आयकर की जो कलेक्शन में वृद्धि वो बरकरार ही रहेगी, कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक बात मैं और भी एक साथ साथ कह दूं कि हालांकि हम आयकर जो करों की हम कलेक्शन की वृद्धि देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर हमें फिस्कल डेफिसिट के से हमारी नजर हटा लेना नहीं चाहिए। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जिसकी आलोचना चर्चा आपने पहले की कि इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि फिस्कल डेफिसिट और डेट लेवल को कम करना ये एक बहुत बड़ा एक अस्त्र है जिससे हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की कंट्रैक्शन ना करें टाइम के मुताबिक और डेट लेवल को कम ना करें, मैं समझता हूं कि सरकार की जो स्पेंड करने की क्षमता जो है उसमें भी हानि आती है। तो डेट लेवल और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना इन्फ्लेशन के लिए बहुत बड़ी एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन प्लान जो है वो इस बार भी उसी धारा में चलेगी जो डायरेक्शन हमने अभी तक देखा है। अग्रवाल साहब, पिछला चुकाएंगे नहीं तो फिर आगे की तैयारी कैसे करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिस्कल डिफिसिट का जो अंतर है उसको पाटना और फिर उसमें बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए वही है, फिजिकल डेफिसिट को कम करते हैं तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रोथ थोड़ा अफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी आई थिंक जैसे 6.8 इस साल है तो 50 पैसे को हम टारगेट बना के लें, 6.3 इसमें रखें बजट में, नेक्स्ट में फिर 50 पैसे घटाएं, 5.8% करें, तो ये एक रोड मैप हमें 5 साल का दे देना चाहिए। और दूसरा ये है कि ग्रोथ में हमें अट्रैक्ट करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रही है। गवर्नमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए, उनको सहूलियत दी जाए, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, डेवलपमेंट भी होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा। और ये जीएसटी जैसे हमारा 1,38,000 करोड़ जनवरी का है, ये बड़ी रोजी पिक्चर है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है कि सरप्लस मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिशिएंट सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है, तो हम कुछ सोशल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकते हैं, तो वो भी बैलेंस करना चाहिए रूरल को दिमाग में रखते हुए। ठीक है सुरजोत जी, आखिरी सवाल आपसे बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्या माना जाए कि मध्यम वर्ग जिसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं उसको लेकर के कुछ बेहतर तस्वीर निकल सकती है, और बेरोजगारी जो कि कोरोना संकट ने और ज्यादा बढ़ाई है, पहले से तो परेशानी थी ही, इसका भी कोई समाधान निकल सकता है? मेरे ख्याल से देखिए, जो बजट का जो ओवरऑल मैसेज होता है वो बेसिकली सारे सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए होता है। और इसमें जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो बेसिकली हम जिसको कह सकते हैं कि आपका ईज ऑफ लिविंग कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रहेगा। और मध्यम वर्ग का उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ स्टेप्स होंगे मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ सुरजीत गुप्ता सर आपका और इससे अग्रवाल सर आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हम संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं और जो हाथ में हम टैबलेट उनके देख रहे हैं, इसी टैबलेट से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना चौथा बजट भाषण देंगी। और क्या क्या बड़ी घोषणाएं इस टैबलेट के जरिए, क्योंकि पेपरलेस बजट है लगातार अब दूसरा हमारा, क्या बड़ी घोषणाएं बजट में सामने आएंगी, पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं और दोनों वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। मरून रंग के बिल्कुल बैग में है जिसमें अशोक
की लाट लगी है और वित्त मंत्री के साथ दोनों वित्त राज्य मंत्री भी वहां पे मौजूद हैं और ये संसद का प्रवेश का गेट नंबर 1 है और ये तस्वीर कोरोना का देखिए कोरोना काल है, लेकिन कैमरे के सामने जो है मास्क उतारना पड़ता है, तो कैमरा सब टीम की अनुरोध होता है कि मास्क उतार दें ताकि तस्वीर खिंचा सके। तो ये देखिए बजट इस उनके लाल रंग के जो बस्ते में टैबलेट में है और वो बजट लेकर सुबह 11 बजे यानी अब से करीब करीब 1 घंटे बाद आम बजट 2022-23 हम सबके सामने होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अभी अभी संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी के बाद। अब बजट को लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। कुछ ही पलों में कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी बजट को लेकर और उसके बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट और लोकसभा में पेश करने के लगभग 1 घंटे बाद राज्यसभा में बजट टेबल किया जाएगा। ये तस्वीरें आप वित्त मंत्रालय की देख रहे हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय से रवाना हुई राष्ट्रपति भवन की ओर और राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद अब वो संसद भवन परिसर पहुंची हुई हैं। Well, there you are. You're watching these visuals live from the Parliament House complex. You have a Union Finance Minister and other officials of the Finance Ministry posing for a photograph before the budget will be presented in the House. In just another 57 minutes to go, nearly an hour, we'll see Union Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman presenting the budget. These are the visuals that you're seeing just a while back from outside the Finance Ministry. और कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। बजट पेश करने से पहले आपको बता दें कि ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं ये पूरी की जाती हैं, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है और राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद भवन परिसर में है जहां अब कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी बजट को लेकर और उसके बाद जो बजट है वो लोकसभा में 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो कि अपना लगातार चौथा बजट पेश कर रही हैं और कोरोना काल की अगर हम बात करें तो इस महामारी के बीच ये दूसरा बजट है और देश इस समय कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी कर रहा है। रजत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं तो हम एक बात का जिक्र और करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लंबे बजट भाषण के लिए भी जानी जाती हैं। हमने देखा 2019 में उन्होंने करीब 2.25 घंटे का जो उनकी जो बजट स्पीच थी वो रही थी और 2020 में उन्होंने 162 मिनट तक बजट स्पीच दी थी। Well, that's true, and Minister is known for an elaborate budget speech. This time around, it has to be seen now. Again, once again, we have to cut you live over there. We are seeing visuals right from the Parliament House complex. There we have the Finance Minister standing at, well, that seems to be right outside the Central Hall entry. So these are the visuals that you're seeing. Well, there we have, and this is inside Parliament House complex, inside the gallery. And just continuing as to what Preeti said, you're right, Preeti, Union Finance Minister is known for a long budget speech. This time around, well, speech can be long or short, but all the eyes would be on what it has for all of us. Preeti. कुछ ही पलों में
कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद 11 बजे, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, ठीक 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट 2022-23। क्योंकि कोरोना की चुनौती के बीच ये बजट है और पिछली बार भी हमने बजट में देखा कि किस तरह से कृषि, एमएसएमई, स्वास्थ्य खासतौर से तमाम क्षेत्रों को बड़ी मदद दी गई, बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। तो इस बार किन सेक्टर पर सरकार का जोर रह सकता है, इस पर होगी नजर। और इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ अनिल अग्रवाल, एमपी राज्यसभा बीजेपी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ श्याम सिंह यादव, एमपी लोकसभा बीएसपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ सुबोबॉय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप तीनों से फिलहाल हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अनिल अग्रवाल जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। अनिल जी, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं और उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं, और इस बीच में ये भी बता दूं कि जो शेयर मार्केट है, सुबह इसके बारे में भी आपसे करूंगी। कल भी आर्थिक सर्वेक्षण के बाद हमने देखा शेयर मार्केट में किस तरह का उत्साह रहा, और आज भी हम देख रहे हैं कि खुलने के साथ ही शेयर मार्केट जो है वो उत्साह से स्वागत कर रहा है। अनिल अग्रवाल जी, पिछली बार के बजट के बाद इस बार बजट से और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो किस तरह की घोषणाओं की उम्मीदें, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर सरकार का फोकस ज्यादा रह सकता है इस बार कोरोना की चुनौती के बीच? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट होगा, ये निश्चित रूप से ऐसा होगा जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा अलॉटमेंट किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जरूर कुछ ना कुछ इसमें ऐसी राहत होगी कि जिससे देश के आम नागरिकों को फायदा हो। और आप देख रहे हैं, कोरोना काल होने के बावजूद जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो बहुत उत्साहपूर्वक है, और जीडीपी का भी जो अनुमान है वो भी बहुत बेहतर आया है। जबकि पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, तो ये हमारे करिश्माई नेतृत्व का ही एक वो है कि जिससे कि पूरा देश दोबारा से इस महामारी के होने के बावजूद भी हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा कर रहे हैं। हमारे जीएसटी कलेक्शंस लगातार बेहतर हो रहे हैं। मार्केट में भी आपने खुद ही बताया कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर्स में भी इसका एक अच्छा पॉजिटिव है, और देश की जनता अब इस चीज को समझ गई है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है, और उसमें हम काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। और जिस प्रकार से देश में वैक्सीन लगी है, आप देखिए लगभग 170 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, और इस सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निश्चित रूप से है। और फार्मा इंडस्ट्री और हमारी आईटी इंडस्ट्री दोनों बहुत काम कर रही हैं। तो इसमें एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का रहता है कि आपदा में भी अवसर, तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और जिस प्रकार से देश में फार्मा इंडस्ट्री ने 5-5 वैक्सीन दी हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इंडस्ट्री के लोगों को, साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस भारत को लोग समझते थे कि हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, मात्र एक अकेला देश है जहां इतना काम हुआ, और फार्मा इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा इसमें किया है। इस सब का इम्पैक्ट आएगा। और सरकार जिस प्रकार से गरीबों की सेवा कर रही है, निरंतर गरीब भाई बहनों को फूड दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, निःशुल्क वैक्सीन दी जा रही है, और बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, स्टार्टअप्स को फाइनेंस बेटर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होता है। और जब ये एक विशेष सर्किल है, एक तरफ जब अच्छा होना शुरू होता है तो सारी चीजें अच्छी होती है। टैक्स कलेक्शन बेटर होता है, उससे हम सोशल वेलफेयर स्कीम बेटर कर सकते हैं, लोगों की जेब में पैसा आता है। तो ये एक विशेष सर्किल है जो मुझे लगता है माननीय मोदी जी के आने के बाद इस पे बढ़ोतरी हुई है और लोगों को इसका फायदा हो रहा है। ठीक है, श्याम जी, ठीक है,
श्याम जी, बजट आ रहा है और जो हालात, जो परिस्थितियां, जो आर्थिक सर्वेक्षण में तस्वीर दिखाई है वो भी अब हमारे सामने है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे, ऐसे पहलू हैं जो आप देखना चाहते हैं इस बार बजट में? हमारे सांसद साथी ने एक शब्द प्रयोग किया, करिश्माई नेतृत्व। तो एक तो मैं साफ साफ कह दूं, एक करिश्माई नेतृत्व तो कतई दूर दूर तक नहीं लगता है। आप देखिए आज के हालात में जो बेरोजगारी का रेट है वो सबसे चरम सीमा पर है, सबसे ज्यादा है। और ये वादा करते थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, हर साल देंगे, लेकिन अभी इतने सालों में भी 2 करोड़ क्या, शायद 2 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। ये जितनी चीजें कहते हैं, संसद में भी कहते हैं, संसद के बाहर कहते हैं, सब वेग कहते हैं कि हमने ज्यादा कर दिया, हमने इतना कर दिया, लेकिन वो आंकड़े के आधार पर नहीं करते हैं। दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी स्टेटिस्टिकल डाटा। और आप देखते हैं कि आंकड़ों में तोड़ मरोड़ करने के लिए अभी 2 साल पहले जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के डीजी थे और एक और अफसर थे, उनको बहुत दबाव दिया गया कि आप आंकड़ों को इस तरह से पेश करिए, और उन्होंने उसे इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद उनको इस्तीफा देकर के बाहर जाना पड़ा। तो ये आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। इसमें तो कहीं से भी छिपा हुआ नहीं है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। आज तक ये नहीं बता पाए कि कहां, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी संख्या में रोजगार दिया। ये तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया। एक बार पार्लियामेंट में मुझे याद है कि इन्होंने एक संख्या भी बताई थी, लेकिन जब सांसदों ने इस चीज के लिए घेरा कि कहां कितना दे दिया, कितना रोजगार किस डिपार्टमेंट में, तो वो उसको बताने से भाग गए। फिर ये तो रहा बेरोजगारी का। आप लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज गोइंग हाई। कितना इन्फ्लेशन है। जो कामकाज, जो हमारे निम्न वर्ग आय के लोग हैं, उनके घरेलू जो बजट है उसको मीट करने में कितना प्रभाव डालता है, कितना असर करता है। इन्फ्लेशन इज आल्सो ऑल टाइम हाई। अब इनका जो बजट डेफिसिट है वो जितना डिक्लेयर किया था उससे भी ऊपर जाने की उम्मीद है। ये LIC को बेच करके इनकी उम्मीद थी कि 3 लाख करोड़ रुपया उससे आने की उम्मीद है, जिससे बजट डेफिसिट कुछ कम होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो LIC को बेच पाने में कामयाब होंगे। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में देख लीजिए, पूरा देश, सारी दुनिया जानती है। यानी आप कह रहे हैं महंगाई और रोजगार, ये 2 मोर्चों पर आप देखना चाहेंगे कि किस तरह के कदमों का जिक्र होता है बजट में? अभी तो मुझे ठीक है, आप शाम की 2 मिनट में आते हैं आपके पास। 2 मिनट में। So we are also joined with Mr. Sunil Khan Munjal. He is the chairman of Hero Corporate Services. Many thanks, Mr. Munjal, for joining us. Sir, we have seen that these are not the usual times. We have been into the pandemic times the last 2 years. And one of the major area of the interest of this government has been stress on the indigenous manufacturing, the indigenous sector, Atmanirbhar Bharat. Now, going at, or rather assessing the economic survey, what stimulus or the boost do you see for that particular facet, sir? So, as you know, the overall economy has started looking up, which is very encouraging. But we do know that it's a mixed bag right now. There are some sectors looking quite good, but some suffering quite badly still, partially due to COVID, partially due to external other reasons. So I think there is a need right now for us to expand the PLI scheme, especially since you talked of manufacturing. Expansion of PLI across many more sectors would be very, very helpful. For the government to be able to continue to spend on infrastructure, I think is very critical and important, and allow additional private sector investment to crowd in. The government will have to carry some of the load additionally this year as well,
Therefore, it also needs to create additional headroom for itself to be able to spend. Whether it comes from divestments, whether it comes from monetization, whether it comes from more efficient tax collections rather than raising tax rates. I think there's a whole variety of things that need to happen. At the same time, we have to also ensure that those left behind, partially due to COVID, but otherwise, are also fully covered. The government, I have to say, in the last few years has done a pretty good job in that respect. But there is some heavy lifting to do because we have taken a very hard knock, both due to COVID and due to global circumstances. Well, that's right. Many thanks, sir, for your remarks here. We also joined with Mr. Vineet Agrawal, he's the President, ASSOCHAM. Sir, your first reaction to the economic survey, and I'm having a very broad-based question here. What are the general expectations that you're having from this budget? Sir. Thank you for having me. I think the general expectation is that the transparency that the budget had brought about last year, the Honorable Finance Minister, I think that should definitely continue. Remember, we are coming off from a very, very challenging year, and what was last year versus this year is a big difference. We've been able to manage the pandemic decently well. We've got a high degree of vaccination. So the expectations are also high that we are able to now use this momentum to accelerate and become part of the global supply chains that we've been envisioning. There is a lot of potential for our country to get into that space. There is a major shift that's happening globally. So the expectation would be broadly that investment into infrastructure, we know that has a trickle-down effect of almost 2 to 3 times. So if that continues and it accelerates, it will not only help in assisting the manufacturing sector because it helps in the ease of doing business or reducing logistics cost. Other than that, the investment into health, which should continue because there is a pandemic that's still on and we might have other waves that might come about. And the last but most importantly is education. Because in the last 2 years, a lot of people have been, a lot of children have been away from education. And this would be a good time to reinvest and actually put down more money towards this investment of into education. Well, there we have Mr. Vineet Agrawal. Many thanks, sir, for your opening remarks. So we also joined with Shomoy Bhattacharya ji. Sir, starting up with the various sectors here, let's emphasize on the one sector of the infrastructure, and of course in that the urban infrastructure. Where do you see the stimulus or the push for urban infrastructure going in this budget? We have seen that there has been a rapid urbanization, there is a stress on urbanization, there is a master plan, but certain urban areas, or to say in larger sphere, we see the urban areas are still wanting of the infrastructural development. Shomoy. See, urban areas, the government, central government that is, has just before this budget, for instance, announced a very major scheme, which was the allocation of about 5,400 buses, electric powered, for 5 cities in India. The tenders have already gone out. It's probably the biggest ever tender for bus supplies in cities. So there are those sort of things that are coming in. But having said that, urban governance is largely a municipal problem. It is a state level problem. States and the municipalities have to ensure that they are able to step up the accelerator in terms of putting in facilities that you are so rightly saying. All our cities today, for instance, yesterday the economic survey came up with the list of startups across India, and you can see it's spread across India. Now, all of those startups, when we are talking of them as employment generators, they have to be getting facilities of bringing in people to those cities, managing them, getting support from the municipality, and those have to be done by the state governments. So I would say more than the center, it is the state government's responsibility to ensure that there is a healthy competition among the cities to grow and to welcome more and more people coming in. The pandemic, for instance, showed us what a strong role cities play in terms of providing employment wherever in India. So that's a very significant thing. So urban governance is certainly very big. I would expect the finance minister
to be making, showing an interest in that area. Right. But I would say that that is something which the states and the cities have to be very strongly attuned to be able to handle that sort of a pressure. Yeah. गुंजाल सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पिछले जो 2 दशक रहे हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं सेक्टर के लिए। और अगर हम देखें तो इस सेक्टर का योगदान जो कुल जीडीपी है उसमें करीब करीब 7.5% का रहा है। अब जिस तरह से हम ऑनलाइन बिक्री देख रहे हैं और डिजिटलीकरण की जब हम बात करते हैं, उसकी कितनी जरूरत आपको लग रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अब जो नई मांग एक तरह से अब सामने आ रही है, उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत किए जाने की जरूरत है? तो बदलते दौर के साथ जो इस सेक्टर की जरूरतें हैं उसे लेकर बजट में किस तरह की संभावनाएं आपको दिख रही हैं? देखिए, ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है और इसके अंदर बहुत बड़ा मल्टीप्लायर भी होता है। मल्टीप्लायर है कि जब एक फैक्ट्री लगती है ऑटोमोटिव की, उसके चलते हुए कई सैकड़ों फैक्ट्रियां और लगती हैं और लाखों जॉब्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो एंसिलरीज हों, सप्लायर्स हों, सर्विस प्रोवाइडर्स हों, डीलर्स हो, वर्कशॉप्स हों। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटी प्लस ये सोशल नीड है हमारी नेशन की और दुनिया की, इसलिए जरूरी है कि इस एक्टिविटी को हम और बढ़ाएं, क्योंकि इसके कारण सारी इकोनॉमी चल पड़ती है। और जैसा आपने कहा कि इसके लिए चेंज भी जरूरी है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जब सारी दुनिया चल रही है तो इंडिया भी उसी स्पीड पे चलेगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूरी है। और डिजिटलाइजेशन जो आपने कही वो ओवरऑल इकोनॉमी में और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी और हायर एफिशिएंसी के लिए जरूरी चाहिए। तो इसलिए इस सेक्टर के लिए और इसकी प्रोविजन जो है, खासकर जो इसके साथ में बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री जुड़ी है, बहुत सारे सेमी स्किल्ड जॉब जुड़े हैं, तो इसके लिए जो छोटी इंडस्ट्री है उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बोथ थ्रू द एनबीएफसी सेक्टर एंड थ्रू बेटर क्लीनर बैंक बैलेंस शीट, हम उस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रहे हैं। तो इन चीजों को एनहांस करने की जरूरत है ताकि ओवरऑल जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर वो हमारे को पूरी इकोनॉमी को और जॉब क्रिएशन को और अर्निंग्स और इनकम को फायदा करे। और दीपिका सिकरवार भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, संवाददाता, सीनियर एडिटर द इकोनॉमिक टाइम्स। Well, there we have Ms. Deepshika Shikarwar here as well. Deepshika, stressing on the education sector, especially like as we have seen during pandemic times, the gears of education has changed. Of course, like the access to education remains one question. So where do you see budget giving stimulus to that sector? So, we've seen pandemics brought about a dramatic change in the way the education is delivered at every level, even in schools or even in higher colleges and so on and so forth, because children are unable to go to colleges and schools so far. So that digital intervention has come about in the delivery of education. Now, while, states have a large role here, but in terms of center's role, we do expect the budget to sort of bring about some kind of support measures to support, this whole digital intervention which has sort of come about, how this can be taken forward. Another aspect, which has been highlighted by the industry again and again is, on the skilling side. So while, students are coming out, but they are not really employable. So how do you sort of bring about that intervention in skilling? So you marry both education and skilling per se. So it is expected that there could be some changes in the apprenticeship scheme and also some initiatives on the skilling side as well, maybe a new program or some new scheme is expected. So those kind of interventions, we believe that the budget could be unveiling today.
That's really important sector, and that's really important aspect of education as well. Preeti? बिल्कुल, और एजुकेशन की बात को हम आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ। उससे पहले विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, मैं थोड़ा सा रियल स्टेट सेक्टर को लेकर, खासतौर से हाउसिंग को लेकर आपका कमेंट भी चाहूंगी। इसमें हम देखें तो जो ये सेक्टर है वो भी जो जीडीपी में अपना रोल है वो काफी अहम निभा सकता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो कोविड का टाइम रहा है, इस दौरान लोगों ने अपने घर का जो महत्व है उसको और ज्यादा समझा है। और हमने देखा है कि सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती की अगर हम बात करें, सबसे कम होम लोन दरों की बात करें, तो इस तरह के कुछ फायदे दिए हैं। अब जो बजट है उसमें रियल स्टेट सेक्टर को जो समर्थन देना है, वो सपोर्ट कितना आगे जारी रहेगा, और अभी कितनी उम्मीद और किस तरह की जरूरतें हैं इस सेक्टर की इस दौरान? पैंडेमिक के दौरान जैसा आपने सही कहा कि घरों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग चाहते हैं कि वो घर पे रहे, या वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट चालू हुआ है उससे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है हाउसिंग सेक्टर पे, और जो डिमांड है हाउसिंग सेक्टर पे वो काफी बढ़ गया है। आपने देखा जब ये सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में जो एक कई बड़े शहरों में, कई शहरों में काफी बहुत डिमांड क्रिएट हुआ फॉर हाउसिंग सेक्टर के लिए, और ये जो है लगता है आगे भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये जो हाइब्रिड मॉडल है वर्किंग का, जिसमें कुछ टाइम हम ऑफिस में हैं, कुछ टाइम हम घर पे हैं, इससे जरूर एक चेंज आएगा और एक डिमांड आएगा कि हम अपने घर क्या थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, क्या एक उसमें एक ऑफिस एरिया भी हो सकता है। तो इसके अलावा जो मीडियम मिडिल क्लास एंड अबव मिडिल क्लास है, वहां भी डिमांड फॉर हाउसिंग का भी देख रहे हैं कि ग्रोथ। तो इस बजट में एक एक्सपेक्टेशन जरूर है कि जो डिडक्शन मिलता है हाउसिंग लोन पर, जो इंटरेस्ट का सेविंग मिलता है, क्या वो डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है, क्या वो डिडक्शन डबल किया जा सकता है। इससे लोगों को प्रॉम्प्ट होंगे, वो सोचेंगे कि हाँ हम और हाउसिंग खुद खरीद सके, लोन ले सके। और लोन भी आजकल इंटरेस्ट रेट हम जैसे जानते हैं कि एकदम बॉटम लेवल पर है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक सेक्टर को भी का ग्रोथ करवाने का, साथ में एक कंजम्पशन की तरफ पुश करने का कि हम लोन लेकर के एक घर ले और हम उसको आगे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। We're also joined with Mr. Arun T. Ramchandani. He is chair on FICCI Committee on Defence and Executive Vice President of Defence and Aerospace. Many thanks, Mr. Ramchandani, for joining us. Well, we have seen last 2 years, I'm just once again sort of, touching upon the aspect of the indigenous manufacturing sector. Defence sector, or to say the defence industry has been on the emphasis of the government. So where do you see this budget giving a boost to that sector, especially when we're looking for increasing or enhancing our exporting capacity? Sir. Thank you. So, if you look at it, defense spend is an imperative for the government. Right. And while that, puts pressure on the finance minister to allocate enough budget for the defense, it also provides an opportunity to boost the domestic industry. Defense capital expenditure, we see that the modernization requirements of the defense services would push for an increase in capital expenditure. And, typically in the past, a lot of the capital expenditure went towards import of defense equipment, which the government has made a conscious effort to change. The focus on indigenization, the focus on the domestic industry is growing. In the current year, we expect that over 60% of the government spend on defense capital goods would be from the domestic industry, and I expect this to grow. The government has made a commitment of about 15% growth year on year on the domestic production, and that would scale up the industry. It would also enable India to be more self-reliant, because in a critical sector like defense, we have to build the capabilities in-house. What that calls for is a greater impetus on R&D and maybe tax incentives for R&D spend. It may be production-linked incentives for scaling up defense manufacturing, incentives for the medium and small industries
that form the tier 2 base of defense production. So I think the opportunities are plenty. The government's focus on indigenization, Atmanirbharta, I think is more than a slogan for the defense industry, and presents a lot of opportunities for the finance minister to create a positive trickle-down effect in the economy while boosting our national security. Well, that's right, Preeti, and so that's really important aspect of any budget, and especially for any country to have enhanced spending on the defense sector, and more so when we're planning to increase our exports and going for the indigenous manufacturing. Preeti. और एक बार फिर से जो मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग जगत की हमने बात की है, एक बार फिर से मैं शिक्षा की तरफ वापस जाऊंगी, एजुकेशन को लेकर जब हम बात कर रहे थे अनिल अग्रवाल जी, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने मैं कहूं कि बिल्कुल ही तस्वीर पलट दी है इस पेंडेमिक के दौरान। कैसे हमने देखा कि घर से जो पढ़ाई है वो हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से बढ़ी है, और इसने जो गैप है एक तरह से गांव और शहरों का वो भी हमारे सामने रखा है कि कैसे गांव में पढ़ाई प्रभावित रही है और जिनके पास सुविधाएं हैं वो पढ़ाई इतनी अच्छी तरह से जारी रख पाए हैं। तो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर आपको क्या लग रहा है, इस बार बजट क्या पूरी तरह से एक अलग तस्वीर हमारे सामने पेश कर सकता है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को अपने शीर्ष एजेंडे में रखा है, और आप देखिए कि जो इतने दिनों से पेंडिंग था, नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है, और ये पूरी दुनिया के सामने एक कोविड में चैलेंज था। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से स्कूल्स में, कॉलेजेस ने उसको जारी किया है ऑनलाइन के माध्यम से, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सरकारों ने भी, स्पेशली राज्य सरकारों ने, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बच्चों को लैपटॉप्स दिए गए हैं, टैबलेट्स दिए गए हैं, और उनके माध्यम से सारी स्कूली पढ़ाई हुई है। मैं खुद चूंकि एजुकेशन में हूँ तो मैं जानता हूँ थोड़ा दिक्कत जरूर है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के सामने आई है, स्कूल गोइंग में जो बहुत सारी चीजें हैं बच्चे सीखते हैं, शेयरिंग है, एटमॉस्फेयर है, वो सबसे ज्यादा उन्होंने मिस किया है। सिलेबस से ज्यादा उन्होंने जो बाकी सब टीचिंग्स हैं वो उन्होंने मिस की हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति आने से बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, और मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोजगारी है। स्किलिंग इज द मेन फोकस जो नई शिक्षा नीति में है। नहीं, अभी तक प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे जो यूथ है, जैसा कि हमेशा चर्चा में भी आता है, कि वो डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन स्किलिंग नहीं हो पाती उनकी, और जो वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते। अभी एक हमारे इंडस्ट्री के साथी ने भी ये कहा, तो उस पर भी हम लोग फोकस दे रहे हैं, और नेचुरली पैंडेमिक के पीरियड में वो चीज हम लोगों ने मिस की है। लेकिन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस, और इस बजट में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण एक मुझे लगता है बजट में एक पार्ट होगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो उसका बहुत फायदा देश के युवाओं को होगा। और हम समझते हैं कि शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं कि किस प्रकार से देश के युवाओं को शिक्षित किया जाए, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। बिल्कुल। और इसके बाद श्याम जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले अब आधे घंटे से भी कम का वक्त है, बजट पेश होने वाला है। मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, सूरज मोहन झा और कृति मिश्रा, संसद भवन परिसर से। सूरज, पहले आपके पास आऊंगी, क्या हलचल है, क्या सरगर्मियां है? कैबिनेट की मंजूरी की जो प्रक्रिया है क्या वो पूरी हो गई है बजट को लेकर? सूरज, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं समझना चाहूंगी इस समय क्या चल रहा है, किस तरह की सरगर्मियां हैं? जो कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है बजट को संसद में पेश करने से पहले, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? हम कोशिश करेंगे एक बार फिर वहां जो अपडेट है संसद में वो आप तक पहुंचाने को लेकर। जी श्याम जी बताइए इसके पहले ये कहा जाता है ना 10:10 का समय था लगभग कि इस दौरान होगा, और हम I will be very happy if GDP goes high. I will be very happy if the nation flourishes. I'm from opposition. Don't think that everything I criticize. I will be very happy. But before education, we must go to the most basic, most fundamental sector of the country. Like agriculture, which is the base of the country. Agriculture is the base of the country. I must say
since last so many years, when this party is in power, the quantum of agriculture, if you count in terms of quantum, so in GDP, its share is increasing. But if you count it year by year percentage-wise, it is stagnant. Rather, it is going down, first thing. Okay. And you know the condition of the farmers in this country. I need not say too many things here. You are seeing and you have seen. Secondly, in education, as compared to other countries, we are not spending that much percentage in education, which education should be. And similarly, in the health sector, if you leave apart the expenses allocated differently, separately for the COVID, we are nowhere. No, in health sector, we are not spending that much percentage of the budget amount which should be there. These, agriculture, education and health, these are three very broad and basic sectors of the economy and for the development of the nation. So I hope unless you put emphasis on these basic sectors, you are not going to do much. सुबह श्याम जी जो बात कह रहे हैं आपने सुनी है, और हम अगर देखें तो कृषि और ग्रामीण विकास जो दो बातें वो उस समय कह रहे हैं, मंशा जो सरकार की रही है वो अपने लक्ष्य तय करने की बात रही हो, चाहे वो 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात रही हो, ग्रामीण विकास को लेकर बात रही हो, आवास योजना की बात करें, पानी की बात करें, बिजली के कनेक्शन की बात करें, शिक्षा की बात करें, सरकार की मंशा जो रही है वो हमने देखी है, साफ रही है, साफ नियत से जो योजनाएं हैं वो लागू की गई है और बजट में भी इसको लेकर हम बड़ी घोषणाएं देते हैं। इस बीच जो विपक्ष के जो सुझाव हैं उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे कि क्योंकि जब सत्र शुरू हुआ हमने देखा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ चर्चा होनी चाहिए और तमाम चीजों पर चर्चा संसद के अंदर भी होगी। कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं उसे लेकर आप बजट की घोषणाओं को कैसे देखते हैं कि हर एक को खुश एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन मंशा को हम कैसे समझेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये अच्छी तरह समझे कि पिछले 2 साल का कोविड का वार इस टाइम में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और सिर्फ भारत नहीं दुनिया के करीब हर देश में, ये सबसे बड़ा डिसरप्शन रहा है। इस डिसरप्शन को श्याम जी आप भी रखिएगा अपनी बात, आप भी रखिएगा। इस डिसरप्शन से निकलने में सबसे पहले जो कदम आजमाने चाहिए वो इस बारी बजट में हमारी लक्ष्य होने चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत सारे मांगे होंगे, लेकिन रिपेयर ऑफ द इकोनॉमी यानी कि सेफ्टी नेट सबसे गरीबों का जो क्रम शुरू हो गया, जो क्रम चल रहा था जिसका आपने जिक्र किया, जैसे अन्न योजना, इंश्योरेंस योजना, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें, इन पर पैसे देना। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जरूरत है उस पर खर्च करना। ये दोनों ही बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य है और मैं करीब एब्सोल्युटली सर्टेन हूं कि इसी पे ही खर्च ज्यादा होंगे और वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है। बाकी बहुत सारी चीजों पे खर्च करने का या प्रावधान करने का समय आएगा, लेकिन अभी 2022 में ये एक ऐसा मोड़ है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कभी भी नहीं आया था, और इस चीज को अगर हम समझ के चले तो फिर हम बजट को समझ सकते हैं, क्योंकि ये कोई ग्रैंड स्टैंडिंग यानी कि हमने इसमें इतने पैसे दे दिए और इसमें बहुत इजाफा हो गया, इसका समय अभी नहीं है। भारत के हर 100 रुपए में से 40 रुपया ब्याज पर खर्च हो रहा है। टैक्स जीडीपी रेशियो सिर्फ 10% है, यानी कि खर्च और रिसीट्स में बहुत बड़ा अंतर है, और इसके बीच में कोविड का वार। तो ये चीज को समझ करके हमें पूरे खर्च के जो पूरे प्रणाली है, पूरे जो सिस्टम्स है, पूरे जो पैटर्न है, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए किस सेक्टर को कितना छोटा सा के बड़ा मिला, वो उससे भी ज्यादा ये जो लार्जर पिक्चर है जो वो चीज को देखना बहुत जरूरी है। और ये पूरा बजट का ये कोई मतलब इसमें कोई स्कीम्स वगैरह उसके हिसाब से अगर ना देखा जाए
ये रिपेयर जॉब किस हद तक इसको पूरा किया जा रहा है, किस तरफ इकोनॉमी को आगे लिया जाएगा, वही इस बारी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। और उसी पर मैं ठीक है, एक छोटा सा अपडेट हम संसद भवन परिसर से ले लेते हैं रजत। श्याम जी आएंगे आपके पास। सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सूरज, बताइए हमें, अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है, फिलहाल क्या सरगर्मियां हैं, क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल प्रीति, अगर हम बजट की बात करें इस साल के, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट आज लोकसभा में पेश करने जा रही हैं। और जो परंपरा रही है, बजट की कॉपी के साथ राष्ट्रपति के साथ से मुलाकात की जाती है, वो अपने दोनों एमओएस के साथ उन्होंने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। उसके बाद हमने देखा संसद भवन परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। वहां पर बजट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके बाद अब जब लोकसभा बैठेगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट लोकसभा में पेश करेंगी। जिस तरह से हमने आर्थिक सर्वेक्षण देखा था प्रीति, उसमें जिस बताया गया है, एक लार्ज स्केल पर जो वैक्सीनेशन हुआ है और तमाम योजनाएं जो चली हैं, उससे बाजार में आर्थिक जगत में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और उस वजह से इस बार सकल घरेलू उत्पाद 8 से 8.5% रह सकता है। जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि कृषि क्षेत्र में जो महामारी रही, कोरोना महामारी, उसका प्रभाव बहुत ही कम रहा है। तो उसके भी परिणाम, उसको लेकर हमें योजनाएं और जो कुछ घोषणाएं हैं वो इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। सेवा क्षेत्र में हमने देखा है कोरोना का ज्यादा प्रभाव रहा है। तो हम आपके पास फिर से आएंगे। वी आर स्टिल जॉइंड विद दीपिका सिकरवार। दीपिका, वी आर जस्ट 18 minutes away from the budget speech. I have a very straight question to you. Consumer spending. What stimulus is required to enhance, to increase, to give boost to consumer spending? Because that happens to be the nerve center of any economy, especially the developing economy. Deepshika. So, we've seen, and the all-round expectation is that, the government would unveil some steps to support demand, which is needed, because if we want the private sector investment to come in, we need that demand to be supported going forward. But what kind of measures can we expect? Whether the government would like to sort of, do some tinkering bit on the income tax side to ensure that, the tax-paying population, the taxpayers, they have some more money in their hands, or whether they would enhance, the support programs that, support people in rural hinterland, programs like MNREG that can also be huge demand supporting programs. Right. So, but these two areas, while we're not sure whether there is any much room for the government to, really raise income tax exemption limits. There could be some minor tinkering that is expected, but huge support for the social sector programs which directly sort of hand out money or put money in the hands of people, which also sort of support consumption and in the long run. Right. That are likely out in the budget. Well, that's what the consumer spending as it is. It's really an important facet of any economy, and we are joined with a colleague, Kriti Mishra, from the Parliament. Kriti, I know you have squeezed in a little bit of time before you rush in to the chamber. Now, what about the government spending? What are the expectations on that count? Kriti. Well, Rajat, this was an unprecedented crisis, a very difficult one for the global policy makers. The repeated waves of the mutating virus, global supply chain disruptions, and also travel restrictions, and of course the fluctuation in the oil prices that we saw. And India was no exception. And as you know, that the government meticulously adopted a very calibrated strategy. Well, the economic survey talks about the barbell strategy. What is that? Well, safety net, a bouquet of safety nets that provides cushion to the most vulnerable section of the society. Look at the growth projections, 8 to 8.5% in 2022-23. This is in line with most of the multilateral institutions, where the World Bank, Asian Development Bank, even IMF says that India would be the fastest growing economy for the next 3 years. So that is the kind of hope that we have. Look at the other projections. Agriculture, 3.9%. Industrial growth, 11.8%. 75 IPOs. Otherwise, the fiscal space, the revenue receipt grew 67% year on year.
Even the gross tax revenue was 50% higher. So that gives us hope. So probably this budget will strike a balance of being fiscally prudent as well as creating jobs, and the focus could be on infrastructure. This still remains to be seen whether the finance minister will tinker with the interest rates, but of course there are expectations on the exemption limit. So this is a very good cycle. As you know, disposable income gives way to more consumption, spending, saving, that gives way to investment and capital formation. So that is the hope from this budget, which is going to provide the economic vaccination to this country. Over to you, Rajat. Well, that's what, Kriti, thanks. We'll leave you there. We have a long day ahead. We keep coming back to you, back to our studio guest, Mr. Anil Agrawal and Shyam Singh Yadav. Kriti? श्याम जी, आप अपनी मैं केवल जी बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में, मुझे जल्दी जाना है, एक लाइन में अपनी बात करके जाता हूं। जैसे सरकार ये जो कोविड है ना, इसको ढाल बना के इसके पीछे शेल्टर कर रही, शेल्टर छिपना चाहते हैं। और लर्नेड जो मेरे अभी आपने एक्सपर्ट बुलाए थे, सोकाल दे मस्ट बी न्यूट्रल ऑब्जर्वर, न्यूट्रल कमेंटेटर्स, वो भी उसकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। फरवरी 2020 का जो बजट था, मेरी तरफ से उनसे पूछेगा, मैं चला जाऊंगा कि मैंने पार्लियामेंट में बजट पे बोला है, दिखाया था ईयर वाइज कैसे जीडीपी घट रहा है। कोविड तो आपका उस समय आया ना, जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ एंड 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था ना, और हम फरवरी में बजट में बोल रहे थे, मैंने दिखाया है कि कैसे ईयर बाय ईयर ये जीडीपी घट रहा है। ये उससे पूछेगा और आप भी बाद में देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल मतलब फॉल्स मतलब स्टेटमेंट्स, आई मस्ट से, कि कोविड के पीछे आपका तो पहले ही नहीं संभाला जा रहा था बजट, आपका तो ईयर वाई ये पहले। और मैंने ऐसे बजट बोलते हुए मैंने कहा था जीडीपी ऐसे ऊपर जैसे कोई चीज आकाश में जो गिर रही है ना, लाइक दैट इट इज स्लाइडिंग डाउन। अनिल जी, फरवरी 2020 से पहले आई हैव टू रीच पार्लियामेंट। श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इस पर अनिल जी का कमेंट जरूर लूंगी कि श्याम जी की जो चिंताएं हैं, क्लैरिफाई कर लीजिए। बिल्कुल अनिल जी से ही जवाब ले लेते हैं। अनिल जी बताइए, भले ही कहा जा रहा हो कि जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% 2021-22 में रहेगा, 8.5% का अनुमान हो, तमाम देशों को हम पीछे पछाड़ रहे हो, लेकिन श्याम जी ने जो बात कही है जीडीपी को लेकर, उस पर क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, उनकी कुछ अपनी पार्टी के प्रति, चूंकि वो अपोजिशन के सांसद हैं, उनको कुछ अपनी बात उसी सेंस में कहनी पड़ेगी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने कोविड एक चैलेंज है। और श्याम सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोविड एक ढाल है, तो मुझे तो उनका स्टेटमेंट सुन के बड़ा आश्चर्य भी हुआ और बड़ा दुख भी हुआ। आज पूरी दुनिया के सामने जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो कोविड के कारण परेशान हैं, और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहा है। और उसके बावजूद जो देश के नागरिकों ने सरकार के सपोर्ट से जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का जो एक काम किया है, ये निश्चित रूप से सरकार और जनता, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो सबके सब बधाई के पात्र हैं। और मैं श्याम सिंह जी ने जिस तरह से पूरे के पूरे जो आंकड़े आए हैं उन्हीं को झुठला दिया है और कहा जीडीपी इस तरह से गिर रही है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। और मैं क्या कहूं उनकी बात पे, मुझे लगता है कि एक सांसद को, जो कि अब लगभग 3 वर्ष उनको होने जा रहे हैं, उनको इस प्रकार के स्टेटमेंट से बचना चाहिए और उनको फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। अनिल जी, मेरा एक आपसे सवाल है, जहां तक कि आप जानते हैं सरकार का जो है एक तरह से स्ट्रेस रहा है आत्मनिर्भर भारत को लेके, किन किन बिंदुओं पे ये आपको जो ये कदम है आत्मनिर्भरता और खास करके जो हमारी जो स्वायत्त एक मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसमें किन बिंदुओं पे आपको जो है इजाफा दिख रहा है, या फिर जो है उसमें आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, पूरा का पूरा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग में, वो पूरा का पूरा ये है कि आत्मनिर्भर भारत में हिंदुस्तान में चीजों का मैन्युफैक्चर हो, और उसकी ओर हम बढ़ भी रहे हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर, जहां हमको चाइना और पाकिस्तान और बहुत सारी देशों से चैलेंज मिलते हैं, हमको निश्चित रूप से अपना डिफेंस जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब भारत ने धीरे धीरे सारे भी जो इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब अपने लेवल पे बना रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमने दूसरे देशों से ली भी है,
उसमें भी हमारे जितने भी MOUs में हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम वो मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री में करेंगे। तो डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। भी आप देखिए बहुत सारी जगह हम डिफेंस में एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनसे हमारा आत्मनिर्भर भारत का जहां संकल्प पूरा होता है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री के लिए एक चांस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है जी वो पूरा इसी प्रकार से होगा और निश्चित रूप से भारत की GDP भी बढ़ेगी, लोगों की जब स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी और हर चीज बेहतर होगी इससे। ठीक है, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं VR शर्मा, को चेयरमैन फिक्की स्टील कमेटी। VR शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। कुछ ही चंद मिनट ही बचे हैं बजट आने में और जाहिर तौर पर जब हम उद्योग जगत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात करते हैं, तो जो उद्योग जगत है उस पर सबकी निगाहें होती है और उद्योग जगत भी बजट से अपनी तरह की उम्मीदें करता है। तमाम हर्डल्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर या फिर हम कहें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगातार सरकार दूर करने की कोशिश करती रही है। इस बार और कितने कदम आगे बढ़ते आप देखना चाहते हैं? हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि पिछले 2 साल के अंदर काफी कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको एक मान्यता मिली है। दूसरा, जो PLI स्कीम भारत सरकार ने मेटल इंडस्ट्रीज के लिए और बाकी जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च की है, उससे एक सिग्नल दिया है भारत सरकार ने कि हम लोग प्रो इंडस्ट्री हैं और हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना है। भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अभी मैं पहले जो गेस्ट है हमारे उनको सुन रहा था कि डिफेंस सेक्टर में भी हमने काफी कुछ काम किया है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज कि जो चाइना से इंडस्ट्रीज बाहर आ रही हैं और एक ग्लोबल सेटअप के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ने जा रहा है, उसका मैक्सिमम जो फायदा है वो भारत उठा सकता है और हमको उठाना चाहिए। हमारे पास ज्योग्राफिकली बहुत कुछ है, लेकिन हमारे को कुछ एक ऐसे सजेशंस हमारे हैं जो कि हम टाइम पर देते रहे हैं कि हाइड्रोजन जनरेशन, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इनके ऊपर सरकार को थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी मैन पावर है, उसको हमें उनका स्किल सेट करना पड़ेगा। जब उनको हम स्किल सेट करेंगे और उनको स्किल्ड वर्कर बनाएंगे तभी हमारी आउटपुट बढ़ पाएगी, हमारी क्षमता बढ़ पाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर ये है कि हम बार बार बोलते रहे हैं और भारत सरकार को हमने सजेशन दिया है कि एक भारत एक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होना चाहिए। पूरे भारत में एक ही बिजली की दर होगी तो पूरे भारत की एक जो ग्रोथ है वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, पूरे भारत के अंदर ग्रोथ होगी। अभी क्या है, किसी स्टेट के अंदर 15 रुपए प्रति यूनिट बिजली है, किसी में 5 रुपए है, किसी में 10 रुपए है, किसी में 12 रुपया है। तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो एक पर्टिकुलर फ्लक्स में होकर सीमित हो जाती है, एक पर्टिकुलर सिटीज में ही होकर सीमित हो जाती है। तो उसको हमारे को डिसेंट्रलाइज करने के लिए पूरे भारत के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो इसके अंदर मेजर है, आज भारत सरकार ने पिछले 3 महीने से बहुत चेष्टा करके बहुत अच्छा काम किया है कि कोयले की जो है वो कमी नहीं होने दी और जितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर पावर प्लांट्स में कोयला की उपलब्धि करवाई, जिसकी वजह से ब्लैकआउट की सिचुएशन नहीं हुई। यहाँ पे हम ये सुझाव देते हैं कि कोयले को ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, हमारे को बिजली को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। हमारे को जो बिजली है वो जो कोल के पिट हेड है वहां पे बिजली बनानी चाहिए। एक पॉइंट मैं सर्विस क्लास के लिए जरूर बताना चाहूंगा। Mr. Sharma, we're sorry, the time is short with us, but many thanks for your remarks here. Certainly, we will keep coming back to you. Shubha Bhattacharya ji, just a closing remark, just continuing on what Mr. Sharma said. Now, the sector, steel sector, to say off, what stimulus this sector particularly require? Cuts in the import duty. Also, we have seen this sector is mired with increasing raw material cost. Shubha, closing remarks. Yes, steel obviously, but we have been doing rather well last year thanks to some of the supply disruptions. But I think the best thing that should happen for this sector and for most sectors is that the supply disruptions that's happening across the world, they come to an ease. You know, the container supply, for instance, of course, steel doesn't need that. Across globally has actually is not rising. So essentially, consistency in government policies for the steel producers. It's obviously they would want
that the government keeps on supporting them with higher import duties, but the downstream steel users, they would want that the import duty should not be that high. So it's a very tricky sort of a space there for companies, depending on what their product line is. But essentially, again, as I said, the industrial sector with the peer will be interested in seeing, for instance, what the government's next thought is on PLI, production-linked incentives. You know, these are the sort of major steps that the government has taken to push Atmanirbhar Bharat, and would want to see a more traction or discussion on these sort of issues. ठीक है, और इस समय हम दीपशिका सिकरवार से भी कमेंट लेंगे। दीपशिका, क्योंकि नजरें बजट के पहले शेयर मार्केट पर भी लगातार होती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कल भी जो शेयर मार्केट में एक तरह से उछाल देखा गया और आज एक बड़ा उछाल हम देख रहे हैं फिलहाल शेयर मार्केट में, तो इसे कैसे समझा जाए? मेरा ख्याल है कि जो इंडिकेशन कल इकोनॉमिक सर्वे ने दिया कि ऐसी आशा की जा रही है कि सरकार के पास एक तो फिस्कल रूम है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, तो मार्केट्स जो है इस ही इंडिकेशन को समझ रहे हैं कि फिस्कल टाइटनिंग जो है एकदम से नहीं होगी, सरकार अभी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ही मेजर्स उठाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा फोकस रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा उन्होंने कल भी परफॉर्म किया था, आज भी जो है उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो और दूसरा जो मार्केट जो सिग्नल ले रहे हैं, हो सकता है कि कैपिटल टैक्सेशन, कैपिटल गेन्स टैक्स के ढांचे में कुछ उसको सिंप्लीफाई किया जाए, उसमें कुछ बदलाव। माफ कीजिएगा, आपको ये रोक लिया क्योंकि अब हमें सीधा रुख करना पड़ेगा, सीधा संसद की कार्रवाई अब 11 बजे से शुरू होनी है। आपका दीपशिका बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत में शामिल होने के लिए। और फिलहाल आइए, ठीक 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है। आज आम बजट 2022-23 पेश किया जाएगा, सीधा प्रसारण संसद से थोड़ी देर में। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, जैसा आपको समाचार 2 के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1
माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore
during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23.
20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets.
Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman Ganga Pinjal, Partapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEAN portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover
and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance, RAMP, program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework,
and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amritkal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23,
The program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units, information about specific approvals,
will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration
and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. ABGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the ABGC sector, offers immense potential to employ youth. An ABGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will provide and this will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas,
will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement
as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at
10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment.
the scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech.
Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for Yoga Kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with Dharma, along with collecting taxes which are in consonance with Dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent
during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B AB by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law
in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court. In any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST.
GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth recovery post-COVID. This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry
and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather,
furniture fittings and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sansad TV. Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशाल दहिया। Thank you, Preeti. So finally, we have heard the budget speech from Finance Minister Nirmala Sitharaman, the second paperless budget which has been presented by this government after the last year. We'll take you through all the key highlights, key elements as well, and we'll try and make you understand as to what exactly has the budget said and what does it mean for everyone in the country. But let's first begin with some of the key highlights. Preeti? बिल्कुल, ये जो तमाम बड़ी और मुख्य बातें हैं वो इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी, ये बात बजट में सामने आई है। इसके अलावा जो अहम घोषणाएं हैं, एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान हुआ है। साथ ही आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। छठी जो मुख्य बात है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में ई विद्या के तहत 200 चैनल्स का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी का आईपीओ अब जल्द आएगा।
साथ ही 100 साल के ढांचागत निर्माण पर सरकार का अब फोकस रहने वाला है। इसके अलावा 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क तक जो इसका विस्तार है उसको करने की बात कही जा रही है। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में सामने आई है। इस बजट के जरिए एक बार फिर 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। जो नदियों को आपस में जोड़ने की बात तमाम पिछले काफी समय से हम सुन रहे हैं, उसमें 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा देने की बात कही जा रही थी। एक बार फिर बजट में ये बात सामने आई है। रसायन मुक्त जो प्राकृतिक खेती है उसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की बात है और एमएसपी के तहत रिकॉर्ड खरीदारी, किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा बजट का 25% दिया जाएगा। भारत नेट परियोजना 2025 तक पूरे होने की संभावना है। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई है। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से देश को फायदा हुआ है। गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा नए घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही अगले 5 साल में एमएसएमई सेक्टर को 6,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 2022-23 में चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज को देश में अनुमति दी जाएगी। ये भी बड़ी बात है जो सामने आई है। 2022-23 बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% होगा। तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जो इस बार बजट में सामने आई हैं और बजट को लेकर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना को 2 चरणों में पूरा करने की बात कही गई है। शुभमोय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड, साथ ही संचित शर्मा, डायरेक्टर AIMIL फार्मा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह मैं चाहूंगी कि पहले आप बता दें जो बजट की बड़ी बातें जो अभी हमने स्क्रीन पे दिखाई दी हैं, आपके लिहाज में कौन सी ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जो इस बजट में हमारे सामने आए हैं जिनको आप मानते हैं कि ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो? प्रीति जी, सबसे बड़ा चीज इस बजट में और जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी वो था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार कितना व्यय करेंगे। और उस पर वित्त मंत्री ने कहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 ट्रिलियन 7 लाख करोड़ के तक पहुंच जाएगा, उन्होंने इस पर एक्सीड किया है। शी सेज 7.5 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अभी सख्त जरूरत है पूरे इकोनॉमी में। तो भारत सरकार 2 लाख करोड़ के करीब इजाफा कर रहे हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है क्योंकि पूरे इकोनॉमी का जो हम रोल आउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोविड से कैसे इसका इफेक्ट सुधरा जाए, उसके लिए ये बहुत बड़ा फिगर है। That's on 2.9% of the GDP if you look at that way, and if you add on the states component, it comes out to be somewhere around 4.1%. 35.4% hike in the capital capex outlay of the GDP. So that means these are like very big numbers, and that is what the economy really needed. So, you know, I was not expecting that there would be any tax concessions. I was not expecting that there will be major changes in, tinkering, because this is not the time for that. The economy needs major repair work coming from the COVID. And that is what this budget was about. So for that, this is a big number. The second big number is that the fiscal deficit, as expected, has therefore, instead of correcting to 6.8, it's 6.9. The bond markets and others, they will naturally be annoyed because that means the government will be borrowing more. But that's expected because if we are not going, because that is necessary to finance the expenditure. The government has not raised any taxes as was expected. Now that's an important point because after all the money has to come from somewhere. So and when you're talking about fiscal discipline, keeping the target of 6.4% for the next financial year shows the intentions of the government to stay on the fiscal prudence path despite the setback from the COVID pandemic. Absolutely. So here you have two things. A, that the expenditure is rising. It's going up to 39 lakh crore, 39 trillion rupees, the overall government expenditure.
yet a large part of it is coming from capital expenditure. So that's something very unusual. It never used to happen. It's been happening over the last 2 years, and this year it's a big rise. Okay. And corresponding with that, the fiscal deficit has not been disturbed. So which means the government has essentially just hit it where it's needed. Okay. You would also, I mean, the fine print will also tell you that the subsidy figures for food and for fertilizer, now those are major ones, and those have not been disturbed with that, which means that they continue at pace. We'll come to the other things. We'll come to the nitty-gritties as well, and then we'll look at, now we're speaking about how much money is being spent. Where will it be spent? What are the key focus areas? We'll come to that as well, but let's first take an overview from Sanchit here as well. Sanchit, what's your first reaction in terms of taking a look at this particular budget? And let's not forget that the finance minister began her speech by saying that this budget is going to set the foundation for the Amrit Kal, that is from 75 years of independence to 100 years of independence. Yes, definitely. I think the government has been bang on. From 75 to 100 years, usko hum landmark मान के चल रहे हैं. And I think आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उसके लिए इसके अंदर काफी चीजें बताई गई हैं. एंड आई एम वेरी होपफुल विद दिस बजट दैट जो 100 साल की